So I need to solve the problem, write a function to increment a number given in the form of linked list by 1. What does it mean? If we have a linked list, wait a minute. If we are given a linked list 3, 9, 2, 4, fine. So if I'm incrementing this linked list, means if I'm getting the number this and if I'm incrementing this by 1, we will got the solution 3925. Fine. अगर इसको linked list में अगर मैं करता हूँ represent, it will look like that 3925. Fine. So ये तो एक केस है. Second case और क्या हो सकता है? If we are given a linked list like that 1, 9, 9, 9. Fine. So if I'm incrementing this number, if I'm representing this in number and if I'm incrementing this, I'm getting 2000. Fine. So in that case, the linked list will become this. Means that every node of that linked list get changed. इस केस में सिर्फ आखिरी वाले चेंज हो रहा था. फाइन. इस केस में सारे चेंज हो रहे हैं. We have one more case in that. Fine. If we have like that 9, 9, 9. So if I'm incrementing this by converting this into a number, we will got 1000. Means the number of nodes in that linked list is increased. पहले 3 थे, अब 4 आ गए. Fine. So we need to take care of all these 3 cases and we need to write a program in such a way that for all cases this problem satisfied. Fine. So first of all, we should have to think about the logic. Let's take an example. We have a 3, we have 4, we have 2, we have 1. We have given this linked list and we need to increment the linked list. So the result will be 3, 4, 2, 2. Fine. The logic behind is that initially we have to maintain a head pointer. Fine. And we need to traverse the linked list till the end. क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हमारे लिए सबसे पहले लिंक लिस्ट के आखिरी वाली एलिमेंट की ज़्यादा वैल्यू एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग एलिमेंट्स, क्योंकि हमें सबसे पहले आखिरी एलिमेंट से ही डील करना है. उसके बाद जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू ये 2 यूज़ करेगा. फिर उसके बाद जो इसने रिटर्न किया वो 4 यूज़ करेगा, जो 4 रिटर्न किया वो 3 यूज़ करेगा. सो द वैल्यूज इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वैल्यूज और द नेक्स्ट वैल्यूज ऑफ अ गिवन लिंक लिस्ट. फाइन. सो इस केस में क्या हुआ, हेड को मैं ट्रेवर्स करूंगा. ट्रेवर्स करते 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 आई विल रीच अप टू दिस नॉट. फाइन. अब अगर हेड मेरा यहाँ आ गया है एंड आई नीड टू ट्रेवर्सिंग ऑल दिस थिंग्स, आई हैव टू यूज द कंसेप्ट कॉल्ड एज रिकर्जन एज आई डिड इन DS1 DS2 भी सॉल्व किया था. फाइन. अब आखिरी एलिमेंट पे आ गया. आई नीड टू चेक द डेटा. अगर इसका डेटा, if this data is less than 9, we are good to go. We can simply increment the value. Means head ke data plus 1. Fine. And again we need to return something. We need to return a carry. इस केस में अगर केस मेरा लेस देन 9 है तो कैरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो we have to return 0. Fine. But if the case is greater than 9, इसमें प्रॉब्लम बन जाएगी. इसमें क्या प्रॉब्लम बनेगी, अगर मैं इस केस में सेम लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं तो इट विल रिटर्न 10. मींस इस केस में 10 आ जाएगा. इट्स रॉन्ग बिकॉज एवरी नोड शुड कंटेन अ सिंगल डिजिट. तो बाय लॉजिकल तो यहाँ 0 आना चाहिए, ठीक है, बट 0 कैसे आएगा. सो हेड का डेटा प्लस 1 को यूज करने से कोई फायदा नहीं होगा. तो अगेन वी नीड टू लिमिट द डेटा. यू हैव टू यूज द मॉडुलस कंसेप्ट, क्योंकि हेड का डेटा प्लस 1 में भी 10, बट हेड का डेटा प्लस 1 मॉडल्स 10 विल नॉट बी ग्रेटर देन 10 और इक्वल टू 10. तो इस केस में 10 मॉडल्स 10 हो जाएगा एंड आउटपुट विल बी 0. फाइन. आउटपुट 0 आ गया, यहाँ 0 प्रिंट हो जाएगा. एंड अगेन वी नीड टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ कैरी इज इक्वल टू 1. सेम प्रोसीजर फिर यहाँ पे फॉलो होगा एंड सेम इन दैट एंड सेम ऑन दैट. फाइन. आखिरी में अगर इस पूरे से कैरी निकल के फिर भी 1 आता है, इट मीन्स वी नीड टू ऐड अ न्यू नोड. फाइन. वो उसको किसको चेक करेंगे आगे. सो बेसिकली लॉजिक तो ये है. नाउ इफ आई एम राइटिंग द कोड ऑफ दैट,
So if I'm adding, if I'm writing the code, you can simply make a function. Fine. Int increment node star head. If I'm passing the linked list, means I have to pass the starting pointer or head pointer. Fine. So I need to use the terminate condition first of all in linked list. If head is equal to null, I have to return 1. Why we am returning 1? इसको देखेंगे बाद में भी. Fine. So again I need to traverse the linked list through recursion. So suppose it is returning the value of I'm using increment head next. Fine. So basically it is a recursion part. Now अब अगर ये वैल्यू आ गई है, अब I need to add +1, means I need to add m. Fine. So I am adding head का data plus m. Fine. And after that मुझे सिंपली हेड के डेटा को सिर्फ आरएस की वैल्यू में सीधी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता. आई नीड टू टेक द मॉडुलस ऑफ दैट. फाइन. सो आई नीड टू टेक द मॉडुलस. Fine. Now I return the carry, the value of carry. So I can return res upon 10. Fine. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. This line is very important, and again this line is also very important. और ये भी कि ये ऐसे क्यों है. So let's try to do the dry run of that program. Let's say we have given a data 3, 2, 9, 9. Fine. And I need to increment this. Means if I'm incrementing this 3, 2, 9, 9 plus 1, we will got 3, 3, 0, 0. फाइन. तो आउटपुट ये होना चाहिए. मीन्स हमें सेम लिंक लिस्ट को ही मॉडिफाई करना है. वी डोंट क्रिएट एनी न्यू. फाइन. तो लेट्स डू द प्रोग्राम. इनिशियली वी हैव हेड ऑन दिस. क्या हेड नल है? नहीं. सो इट विल गो इनटू दैट पार्ट. इंक्रीमेंट हेड का नेक्स्ट. तो 3 वाले नहीं, कॉल किया है 2 को. तो पहले 2 कॉल होगा, पहले 2 कंप्लीट होगा. 2 कंप्लीट होने के बाद वो कॉल 3 पे जाएगी. फाइन. 2 के लिए भी सेम से स्टार्ट हुआ. इट्स नॉट ए नल. फाइन. अगेन 2 ने कॉल किया 9 को. फाइन. अब 9 के लिए भी सेम चीज कॉल होगी. हेड नल नहीं है, अगेन इंक्रीमेंट पे गया तो 9 वाले ने दोबारा कॉल किया इस वाले को. अब इसके लिए भी सेम चीज कॉल होगी. नल नहीं है, इसने दोबारा कॉल किया नेक्स्ट वाले को. ये नल है. नाउ इफ इट इज नल आई हैव टू रिटर्न 1. तो इस 9 ने, इस आखिरी वाले 9 के फंक्शन ने 1 रिटर्न कर दिया. सो आई होप कि अब तो मैं समझ पा रहा हूँ कि व्हाई आई एम यूजिंग रिटर्निंग 1. मींस आई नीड टू इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, सो आई कैन सिंपली राइट 1. फाइन. सो द वैल्यू ऑफ दिस is again 9 plus 1, but we need to take care of that. Next step. यहां से हमारा हो गया रिटर्न. यहां से इसने दे दिया 1. किसने? 9 फंक्शन के कॉल ने. एंड आर इज इक्वल टू हेड का डेटा प्लस एम. एम की वैल्यू 1 है, डेटा क्या है 9. तो आई नीड टू यूज 9 plus 1 which is 10. ये मेरा हो गया आर इज. फाइन. It's done. Now I need to modify the data. I need to swap the data. I need to modify the data. So the head cut data is now become res modulus 10. Means 10 modulus 10, which is 0. So अब जो 9 का पॉइंट होगा, जो ये 9 होगा, 9 की जगह अब 0 हो गया है. Fine. So I need to put here 0. And to put 0. Fine. तो ये भी सॉल्व हो गई. Now I have to return something. I have to return the carry. It's basically I am returning the carry. ये फंक्शन में लाइन क्यों लिखी हुई है? देखो कैरी या फिर 0 हो गया 1 होगी, या फिर 0 होगी या फिर 1 होगी. फाइन. अगर आरएस की वैल्यू, अगर ये आरएस की वैल्यू मेरी 10 से कम है तो वो ऑलवेज 0 होगी. बिकॉज 0.2, 0.8, 0.9 इफ दे आर इंटीजर वैल्यूज द वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0. फाइन. सो अगर आर एस की 10 से कम होगी तो इसकी वैल्यू हमें 0 होगी. और एक्चुअली ट्रू भी होगा क्योंकि कैरी इसके में 0 है, क्योंकि हमारा इसी पॉइंट पे किल खत्म हो जाएगा.
बट अगर हमारा 10 होगा जो इस केस में हो रखा है, इस केस में दिस वैल्यू विल रिटर्निंग 1. सो 9 के कॉल ने यहाँ पर इसको रिटर्न कर दिया है 1. गॉट इट. सेम प्रोसीजर. अब क्या हुआ, इस वाले 9 का काम पूरा हो चुका है. अब इस वाले 9 ने जो ये वाला फंक्शन कॉल किया था जो पहले इस वाले में चला गया था वो कंप्लीट हो चुका है. तो अब इसके m ने क्या रिटर्न किया है 1, क्योंकि इस वाले ने यहाँ बटन रिटर्न कर चुका है. फाइन. सेम प्रोसीजर. आर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हेड का डेटा बेस 9, m इज 1, 10 इज अगेन प्रॉब्लम है. आर एस मॉडल से 10 किया, ये 0 आया, तो ये 0 हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी. अगेन दिस वाज सेटिस्फाइड, इट विल रिटर्न 1 टू दिस. सो अब 2 का फंक्शन ये भी कंप्लीट हो चुका है. इसने क्या रिटर्न किया है 1, तो यहाँ भी मेरा रिटर्न हो गया 1. 2 के 1 ने रिटर्न किया है. इस पूरे हटा दो, ये हो गया 1. फाइन. अब 1 को भी हम स्टार्ट करेंगे. इसकी वैल्यू क्या होगी, अरे इसकी रेट ऑफ 2 प्लस m क्या है मेरा 1, 3. तो सिंपली डेटा इज इक्वल टू 3 मॉडुलस 10 विच इज सेम एज 3. फाइन. तो यहाँ 3 आ जाएगा. and it will return the value of RES क्या है मेरा, RES की the value of RES 3 upon 10 is 0. तो it will return the carry 0. I hope it's fine now. रिटर्न कैरी किया तो अब 3 के फंक्शन का भी पूरा हो चुका है, जिसकी इसकी वैल्यू 0 है. 0 प्लस 3 ये सेम रहेगा and it will return the carry 0 in that case. Fine. So the output of this complete program is 0. So the output is 3 3 0 0. बट अगेन ये केस कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक केस और भी बन सकता है. फाइन. तो लेट्स डू अ न्यू. अगर प्रॉब्लम ये होती कि 9 9 9 होता, इस केस में क्या होता गाइज कि 9 कॉल हुआ, रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं. कॉल करने के बाद ये 0 हो गया, आगे कैरी 1 कर दी. इसके सेम ये 0 हो गया, आगे कैरी 1 कर दिया. आगे भी क्या होगा, ये 0 हो गया, आगे कैरी 1 कर दिया. फाइन. तो बेसिकली वो कंप्लीट फंक्शन नहीं, जो द आउटपुट ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन इज 1. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा. तो लेट्स डू द कोड को कंप्लीट करते हैं. नोड complete, let's say we have a writing the function complete node star head. In that case I need to call the function वही वाला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है increment head. अभी ऑटोमेटिकली कॉल होगा. देखिए अब आपको समझ में आ रहा हो कि अगर ये इसकी वैल्यू, अगर यहाँ ये 1 होता तो इट विल सिंपली रिटर्न 0. कैरी की वैल्यू 0 होती है. सिर्फ इसी केस में, सिर्फ ऊपर वाले के सिर्फ इसी केस में कैरी की वैल्यू 1 आ रही है, क्योंकि द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और द नंबर ऑफ डिजिट इज गोइंग टू इंक्रीज. फाइन. सो अब क्या होगा, कैरी की वैल्यू इसमें 1 होगी. वो कैरी की वैल्यू 1 है. इफ द वैल्यू ऑफ कैरी इज 0 तो इट्स ऑब्वियस, फाइन, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. बट द वैल्यू ऑफ कैरी इज 1 मीन्स आई नीड टू एड अ न्यू नोड. And if I'm adding a new node, I have to save this node, I have to allocate the memory to that node. Suppose a new node is temp, and I need to allocating the memory in this. I have to use the malloc concept. Malloc size of node. Fine. Now I need to put that temp data as carry or 1. They are same things. Fine. And again temp. This is very important line. Temp का next is equal to head, and again head is equal to temp, and I need to return head. ये प्रोग्राम बनेगा. ये लाइन मैंने कैसे लिखी है, I need to explain this now. If I am given linked list 4 2 3, I need to add element 1 in the beginning of a linked list. मैंने DS1 में कराया भी था. ये कैसे होगा ये, let us say it is a temp and again ये starting point है इसका, तो ये head होगा.
सो अगर मैं इसको आगे ऐड कर रहा है तो इसको मैं आगे ले आता हूँ. सो 1 का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट कर रहा है? हेड को. ये क्या है? टेम्प है. सो वी कैन से दैट टेम्प का नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड. अब हेड मेरा ये नहीं है, अब मेरा हेड ये हो जाएगा क्योंकि मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट ये हो चुका है. तो हेड मेरा किसके बराबर होगा? टेम्प के बराबर. तो हेड इज इक्वल टू टेम्प. सो बेसिकली ये प्रोग्राम है. मेन कंप्लीट कर लेना अपना इसके अंदर कि मेन कैसे पूरा होगा, कि ये कॉल करना है फंक्शन, फंक्शन कॉल कैसे होगा. फाइन. तो इट्स बेसिकली द कंप्लीट कोड ऑफ दैट प्रॉब्लम. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी लेटर. फाइन. सो ओके, थैंक यू.